good afternoon and good evening, and assalamu alaikum. My name is Nawaz Zai. I am hosting this webinar of Fireside Chat on behalf of IPIP. I just would like to introduce IPIP a bit. We have started this organization in 2019 with the aim to create an efficient and effective networking platform for Irish Pakistanis living in Ireland, specific in ICT sector. We have 200 plus active members. Out of that, we have 15 PhDs teaching in different universities. We have 25 plus as SMEs. They are serving in Irish ICT sector. We are also having in our panel or pool is a CTOs, CEOs, development managers, engineers. They are working in different domains within ICT sector, especially in Ireland. If you know, this is a Europe, Silicon Valley. You call any company, and that company is in Ireland. And I think our community is helping and working in big giants. I just want like to run a quickly video, and then I will introduce our panelist, and then we will go from there. IPIP, Irish Pakistani ICT Professionals. An open access platform for present and future Irish Pakistani ICT professionals. Professional and social networking. Information and training seminars. Career guidance events. Upskilling sessions. Community get-togethers. Irish Pakistani ICT professionals. Join us, guide us, contribute and play your role in this community building project. IPIP, Irish Pakistani ICT professionals. IPIP, Irish Pakistan. Thank you very much. So I would like to introduce our guest, our panelist, Dr. Ghalib Shah. Dr. Ghalib Shah is currently teaching uh, in Islamabad, Air University. He has extensive experience in academia and especially in IoT devices side. The interesting thing is Dr. Ghalib is a founder of Things I Private Limited that offer a lot of services and solutions for IoT security. Our second guest is Dawood Akhlaq. Dawood Akhlaq is CEO of our wallet. Dawood excels in cybersecurity with focus on application security and threat intel. Uh, I also would like to say thanks to Amar Jafri. That's a surprise entry to this small community. So Amar Saab, thank you very much for joining us. Uh, and so let's kick start. बहुत शुक्रिया really honored बहुत शुक्रिया आपका thank you. Thank you very much, Rasaf. Let's kickstart this cybersecurity domain. We are living in a world of threats, is especially in fintech. Every day we are just hearing like a millions and sometimes up to billions type of the vulnerabilities is happening. Either as a customer, either as a personal mobile phone or your email. So and the applications, there's a lot of compliance is happening, but in the same time the threats frequency is increasing day by day, and the community is
especially the ICT community, is thinking at the same time how to resolve those challenges. So I will say that this is one of the interesting fireside chat is going to happen with especially Daud Akhlaq and Dr. Shah, where these guys are working their own day-to-day job and they just felt, oh, we just need to do something or add a value to those threats. So looking forward to hear from their innovations and how they just came up. So I will kick start with Daud. Daud, you are in Italy at this time. And I remember I was talking to you, and you just came a couple of years back from Pakistan to Ireland, to Italy, and then you just had was working. And how this idea came to you? You have to select this domain, and what was the motives behind? Yeah. First of all, thank you everyone for joining, and thank you, Nawaz brother, for this awesome opportunity. So before answering your question, I would like to give you a little bit background of how I started and from where I came. Well, I'm in this domain of cybersecurity since, like, you can say, for almost a decade, and I've been in working in different positions from different roles, including development roles, auditor roles, penetration testing, threat intelligence for various companies, including Accenture, Google, telecommunication, and fintech companies. So while I was working for these companies, including development and Accenture and these banks, as Nawaz brother already told, like, we were seeing different kind of attacks were emerging on daily basis. So every day we were discovering something new, some new technique, some new kind of attack that every day the new type was becoming more sophisticated to tackle. Um, the one of the biggest challenge we were solving at these fintech companies was supply chain attacks. So what was happening? Developer were making different kind of applications like mobile applications, servers, and APIs. They didn't care a lot about security, so they were just focusing on solving the challenge, solving the problem, and making the product ready. But as a security personnel, we were looking on different kind of attacks that we were tracking under SIEM, under SOC, and one of these kind of challenge was supply chain. What was happening actually in really technical terms, we were seeing different kind of connections our applications were making outside our organization. And on deeper analysis, we found that there was a lot of malicious software installed on our applications, and they were unintended installation. Developer didn't have idea what has been installed. Why it happened? The story goes back to open source actually. Well, as you most of you guys know that when we develop application, most of application use a lot of open source component. And if I tell you about on average, one application contains almost 1,600 to 2,000 open source component. Why so? We do these installation or we integrate these components to speed up the development processes and not to reinvent the wheel. We already find the things which we need and we just integrate it and use for our own purposes. So what happened with this speed up, with this integration, we onboard the risk, which is supply chain risk. What happened is these days attacker try to infect open source components that are being used in hundreds of places. So indirectly they infect one package, one component, and they can attack different kind of companies with just one infection. So like hundreds of or thousands of companies. So at that moment, ha- if we are talking about enterprise, we have had like hundreds of thousands of open source components being used in the company. And it was almost impossible to monitor hundreds of thousands of these components for vulnerabilities, for malicious activity. It was really impossible because they were part of our application. They were integrated. From there, this idea born, Woolert born, and Woolert focus is to monitor open source components you are using, but without access to your server. So Woolert is a zero trust security product. It monitors all of the components you are using without any integration. So one might ask, hey, how do you do that? Actually, we tackle this problem in a different way. We didn't want it to become the part of supply chain. So all we need from customers is a list of manifest, or is like a list of component they are using. For each programming language, there's a standard manifest. For example, for PHP Word, there's a composer log file. For JavaScript, it is npm package log or yarn log. So for each language, there's already standard build. All we need from customers or from users is that thing. And through that, we can understand which of the component they are using and how that component is built, which are other components that are being used to make one component. So it's like not just component, but also the complete tree of the components. We monitor all of the components for new upcoming vulnerabilities, for new changes, and we alert customer. So this was the motivation behind developing this product and developing this company. Thank you, Daud. I just would like to ask a quick question to Dr. Shah. I have a couple of friends. They did PhD. They did a very good research, and their research is published and it's part of library.
And when I just read your profile, you took that one, you come up an idea, and then you make it as a product. So, what was the motivations behind, and what was the motives for yourself and for the country? Like what you was thinking when you just took that research from the library and start working on that? Hey, Bismillah Rahman Rahim. Thank you so much, sir, for inviting me for this very exciting forum of IPIP. So basically, I have been working in academia for last 15 to 20 years. So I have published a lot of research in different conferences and journals. But since I was based in Pakistan, so I have felt that my research have never been realized in any in form of product or any kind of application. So I thought, I mean, maybe because there is no industry in Pakistan. So I thought I should do it myself. So after having a lot of research in this domain, so I thought maybe instead of focusing more on the research, I should work to commercialize my existing research so that the research can be beneficial for I mean, for the nation, and maybe we can have some successful technology startup in Pakistan. So that's the reason that I was focused to work on developing some intellectual property from my research. So that's that. So, Very good. and this work was basically supported by National Center for Cybersecurity. In 2018, the government of Pakistan launched four national centers. So cybersecurity was one of those national centers. So in that at that time, I won one of the project. So that was focused on IoT security. So I was the PI of that project. So in that project, we have to conduct research on security of IoT, and then we have to develop a product, and one of the KPIs was that that research has to be commercialized as well. So these are the KPI. So that's why, I mean, in order to fulfill the requirement of the project that we won from HEC, and so we have to do all of these things. So that's the story that why did I start this startup. But of course, I have already been working on different domains. So IoT is my major domain. So I have developed a lot of IoT projects. So what was missing in those things is that there was no security solution for those IoT products. So I tried to investigate some solutions around, and but I hardly find any solution for IoT security in back in 2016-17. So at that time I started to work on the security of IoT myself, and from that I got up the idea of IoT firewall, and then I applied for the funding and I got the funding, and then there comes I mean, we did some research, and that research was basically kind of industrial research, and on that research we have this startup, and now we are trying to, I mean, commercialize these things, and we are trying to sell the products that we have developed in our lab. Very good. Thank you, Arsha. I think this is a very exciting area because this is security is one of the part which being Pakistani we ignore it. I was just talking to someone early on. Is even in Ireland we go to the like shops and we buy a 1400 euro, 1500 euro worth of a device like a laptop, but we Mm. don't buy software for security, which is only 10 euro subscription per year. So we Yeah, always look for someone to give me some maybe a cracked version. Uh, yeah, we are not serious, but in the same time we are suffering. And if you go back to the who got this vulnerability, and most of the people who just like they have this, either they don't have education, either they are eager to just click on the attractions. So definitely during this uh, fireside chat we will learn your product. So I will come back to Daud. Uh, this is the application is the main source of vulnerability for especially in the financial sector, especially in the e-commerce where their details are hacked. And as you just mentioned, that the open source world where the developers are like free to just get this jar file, and bundle maybe 100 jar files for a small capability. And those jar files sometimes they are written with purpose. Sometimes they have some sort of the loophole. If we remember, I think last year we got log4j, and Exactly. log4j was being used everywhere, from the multi-billion company to a very small company. So all what has happened, it was like a sudden surprise, and that's the loophole of the softwares, because software composition analysis is happening from the last 10 years on each product, especially in the corporate sector people are building. And this is the big question mark how this has been missed. So on this one is uh, why we should use open source software.
Is there any other way, or Well, this is a norm now? yeah, well, it's more like a norm now, because we want to be quick. We want the products to be finished as soon as possible. Yeah. So when we want to develop something, we want to use the items or component that are already built instead of rewriting that code again and again. That was the purpose of open source. That was the purpose of GitHub, for example. So Mhm. you use my part, which I have spent hours, and in the same time, you contribute and develop something that will be used for other people. So we should use it to increase our productivity and speed. Yeah. So yeah, it this does make sense. But the issue is that you designed something for the bad, a good. I did something I contributed on, and we have another bingo man which really wants to write down something to extract some information. And the fourth person who is going to just take that jar file or whatever the open source application, and he will integrate blindly. Uh, so I understand where your product is coming from. Uh, so is there any risk on this one? Like, Definitely. Whenever there is some benefit, there are some disadvantages. For example, the risk is when we are integrating to achieve speed and productivity, mhm, sometimes or most of the time, developer never gonna read the code of what he's integrating, never gonna see the code of jar or component he's integrating. yeah, He does not know what that code under the hood is doing. Maybe he just integrates something that makes an image or that makes an API call, but under the hood, that component may be sending your secrets to hacker server, to APT server. So the risk is you are integrating the code of somebody you don't trust, and I you are think open to supply chain attacks. cool. I have a one of the guy. I think Mr. Adnan. Adnan, you have a question? You raised hand. Yeah, yeah. Very first thing, I just need to make clear. I got confused. Are these two guys like Dawood and Shah Saab are the same company or the separate company? Oh, they are totally separate entities. One is in Okay, Pakistan, the second one is in Italy, and their okay, offerings are totally separate. Their motives are totally separate. So, okay. Adnan bhai, you are going It's, to learn two sides of okay, I this got it. one. I got it. And Yeah. so Ikhlaq basically they have a product that basically scan the vulnerabilities in open sources. Like we can say when you're putting your in DevOps environment, the Sonar Cube kind of thing, and it's just Exactly. scanning it. The open. Okay, got it, got it. And then, I have a. I'll come to you, Clark, later on, but I have a question with the Shah. There's basically you are focusing on IoT stuff, okay? And Yeah. I was just wondering, IoT stuff. Have you have some kind of stats? What is the portion of the IoT in general IT kind of what is the ratio or the portion of the IoT in whole market and business stack? Oh, sorry, stake. Well, I mean, there are a number of stats you can see from different forums. So, I mean, normally people talk about the number of devices, IoT devices, which may be connected over the internet. So, the current prediction says that around 25 billion devices are at the moment connected with the internet, which is a lot more than the conventional devices which are part of the internet. So and when you typically talk about the kind of use case or applications of IoT, which are the most commonly connected devices, then smart home comes first. So the major market, the major portion of IoT devices come from the smart home, because nowadays, even in Pakistan, you can see that a lot of smart gadgets are getting very common in Pakistan. For example, I have installed in my home, let's say, smart switches, the air conditioners are smart, refrigerators have some smart Wi-Fi connectivity. You have set-top boxes, wireless cameras. So everywhere you can see that in a home, maybe you can see five, seven, or 10 devices maybe in your home that you have never realized that they are connected to the internet, and they may be kind of an attack vector for your security. And someone can penetrate to your network and can get your private Okay, information okay. through those So networks. I get that thing. Sorry, I'm not. I'm just it's like 20%, 30%. It's easier for everyone. The market share. So that Market would share, be so people are talking about, let's say, hundreds of billions dollars market is related to IoT. And even if you look at, I have some stats in my slides. I will show you that in last year, UK has a loss of about 1 billion pound due to the security breaches which happens in IoT domain. Cool. I think we have two more hands, Shoaib and Ammar Jafi Saab. So maybe Shoaib, you want to go ahead first? Yeah, sure. Thank you. I have a question. First of all, thanks Sabir Raza to invite me for this session. He's my big brother. So, and I have a question from Eklag. I am currently working in the Volkswagen,
and we are constantly using Black Duck for the vulnerability scan. So my question is, what is the difference between a Black Duck and a product which is Akhlaq is working? Thank you. Yeah. Thank you, Sohaib, for a very nice question. Actually, the interesting fact is we have seen few users from Volkswagen Group in our database. They were using our product. So I don't know if they are from your team or from other team, but we have seen user from Volkswagen Group Sweden actually. So how Bullet is different from other competitors like BlackDuckGo, Sneak, or Mand, or there are a lot of others. The only difference is like we are zero trust security provider, so we does not become the part of your supply chain. So we never ask you to install anything. We never ask you access for your code base. So we never have any idea about your servers, your code, your IPs. We have zero knowledge about your infrastructure. Second, our database is really unparalleled. All of our vulnerability alerts contain information like workaround, how to fix, background about vulnerability, and it is really unique. I can really bet on it because we spent hours and hours on each vulnerability. Whenever there's a vulnerability alert, we put a lot of efforts on writing how to fix and work around. And later I will show you, even searching on Google, you will find vulnerability on others' website and our website. Our content will be really unique and rich for developers. Thank you. Amar Saab, sir. जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इसको अरेंज किया चीज़ों को। डॉक्टर गालिब, दाऊद अखलाक साहब, मेरा सवाल आप दोनों से है। देखिए, इन प्रिंसिपल अगर हम गौर करें तो देयर हैज बीन अ सीरियस cyber security issue in Pakistan. Yes, the cyber crime issue is the responsibility of someone. There are so many organizations competing for that. Luckily or unluckily, I've been part of that. But after my retirement, I'm a total free person. I can comment on that. My worry is that up till now, we have not decided that who will take the responsibility of cybersecurity in Pakistan. Now, the new challenges in terms of IoT devices, you rightly said there are billion devices. In every house in Pakistan, almost there are 6-7 devices which are working and communicating with internet. My worry is that there can be some zero-day attacks on these. There can be number of other challenges, issues, which devices communicating with which device. There's nothing like common criteria in Pakistan which we can at least gauge the quality of the stuff we are having right now. So my question to both of the worthy panelists are that while we have not yet even establishing the baseline of cybersecurity in Pakistan, we are adding all these additional devices in our internet. There's no policy for that. To my knowledge and understanding, there's no IoT policy in Pakistan right now. So I personally feel that there is a genuine need of such dialogues on a very serious note that we should adopt a IoT strategy in Pakistan, IoT policy in Pakistan. Every IoT device which is coming to Pakistan as embedded with any gadget we are talking about, that should be processed through a common criteria. I would like to comment on it. Thank you much. Yeah, very well observation. Actually, it's bit of truth. Actually, this is what's happening. We are importing a lot of devices, IoTs. I think Dr. Ghalib Shah will speak a lot on IoT side because he has done a lot of research on that. But I'll talk a little generic overview of how I think about that. Why is it not there? Actually, most of as Nawaz Bhai already told, most of guys we really don't care about security. We buy cracked softwares. We go to cracked websites. We really don't care about our data. So this is happening because there are we guys as a nation, we don't care about our data, our privacy, our personal data, pictures, information. So until there are people like us who deny their basic right to security privacy, there's no need to bring that kind of law. So first we need to educate ourselves why this thing is important and how once we identified why it's important, how we can tackle it. So everybody needs to do its job. Like in my case, as the CEO of Woolard, what we are doing, we're talking with different government bodies in Pakistan, and we are offering them free version of Woolard. So we are offering them free enterprise version for multiple months. This is what we can do to do our contribution as a secure Pakistan. So I think this is what we have to do. Yes. So, I mean, your question really very genuine question. Um, I mean, as you said, we need to have some kind of a common criteria, kind of some compliance that every device that comes into Pakistan and it's being sold in Pakistan, it must have to comply with some standard. So, but I mean, Pakistan will definitely follow the other regulations. So recently, I have found that
UK, Europe, and Australia, they have developed their own regulation that any IoT device that comes into UK and if it is installed, then they say that they bind the vendors for in three terms. The first thing is that none of the IoT device should have any default password. This is one of the commonly, I mean, this is the one of the, I mean, major threat to IoT devices that all of them have the very same similar password if they come from the same vendor. So they have strictly the vendors just to change the password for each and every device. And second, if there is any vulnerability found in any IoT device, then that has to be disclosed and that has to be patched within a certain time limit. So they have bound the vendors to fix those vulnerabilities. So similar kind of regulations can also be applied in Pakistan, and I'm sure that it will come. And I know that PTA is working on that. PTA, I have recently read from some of my friends in PTA, and he said that they are, I mean, working on the regulations of installation of the IoT devices and the security of the IoT devices as well. And probably it will come in maybe next few years, maybe 1 or 2 years. I hope so. So that's the reason that I developed. So apart from IoT Firewall, we have another software. We call it as IoT Analyzer. Just like Dawes say that Dawes is scanning the web application, like I mean any open source application. But we have a tool which is online available, and we are scanning the firmware of every device. If you have your IoT device, you can just upload your firmware on that portal. The portal will just provide a complete detailed analysis of that firmware. What are the vulnerabilities? Whether it is compliant to certain standard like a WASP or IoT Security Foundation standard. So we do have, that's why we have developed these kind of tools. So if you want to install any device, then you have to scan that firmware of the device so that if there is any backdoor, if there is any vulnerability, then that come into as a report. Cool. I जी know. डॉक्टर Yeah, sorry, go डॉक्टर ahead. साहब मैंने अपना नंबर शेयर किया है। आप जी काइंडली अगर मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं आई बी इंटरेस्टेड। अपने दाऊद साहब आप भी काइंडली अगर मुझे कर देंगे तो आई बी इंटरेस्टेड। और हम साइबर सिक्योरिटी के ऊपर हम काफी वॉलंटियर वर्क भी कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसके ऊपर फिर आपसे फोकस बात करेंगे। मैं डॉक्टर साहब ये चाहूंगा कि हर बुध को हम 8 बजे वेबिनार करते हैं साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो मैं आपसे उसका लिंक शेयर कर लूंगा जूम का। दाऊद साहब और डॉक्टर गालिब साहब अगर काइंडली आप आकर इस चीज को इंट्रोड्यूस भी करा दें चीजों को वेबिनार पे, और थोड़ा सा गाइड भी कर दें। स्पेशली ये जो आप जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं कि अगर कोई अपना फॉर्मवेयर अपलोड कर दे तो दैट विल बी ग्रेट सर्विस टू द नेशन। थैंक यू वेरी मच। No problem at हेलो all. अस्सलाम Whenever you वालेकुम। want, and हेलो अस्सलाम। जी साबर भाई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मासा सर, आपका नंबर मेरे पास ऑलरेडी शेयर्ड है और आई थिंक मैं आपसे मैसेज आपको मुझे आते भी रहते हैं। और ग्रुप में भी मैं आपके 2 ग्रुप में भी एडिट हूँ, तो मैं उसमें थोड़ा साइलेंट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, already बहुत we are शुक्रिया। in contact and I ओके think ओके, we बस have met maybe few years back as well. हम मैं आपसे चलिए मुलाकात भी हुई है मेरी केस में। जी जी जी। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खुश रखे regarding आपको। nation contribution, I would just like to add my last comment. So if anybody of you is working for any government body and interested to increase their application level security, we will give our part. We will do our best to offer you whatever we have. So Very good. just contact us. अपना दाऊद साहब काइंडली अपना नंबर शेयर कर लीजिएगा। आई विल वेरी थैंकफुल। Definitely, बहुत definitely. शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी साबर भाई। साबिर से बात कर रहा हूँ। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया नवाज भाई कि इतनी अच्छी आपने जो ना वो ये वेबिनार जो था माशाल्लाह दाऊद भाई और ये डॉक्टर साहब जो है वो है, और फिर हमारी ऑडियंस भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी, जिसमें अम्मा साहब भी है। अच्छा, अभी मैं देख रहा था सर, इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्लाउड से रिलेटेड और पेन टेस्टिंग से रिलेटेड लोग भी हैं, जिसमें एक अबड़ो साहब भी है माशाल्लाह, ही इज़ वेरी नाइस। और अहमद जुल्करनैन साहब भी हैं। अहमद जुल्करनैन साहब, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप भी ज़रा क्वेश्चन क्लाउड के हवाले से कर सकते हैं, और अबड़ो साहब आप भी जो है वो प्लीज़ इनसे जो ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह शुजा साहब भी हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्लाउड के ऊपर जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। तो और दूसरी ये है कि अमार साहब के होते हुए और नवाज भाई भी हैं, तो एक मेरी सजेशन है कि हम जो है वो एक अपने इन तमाम जो भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो भी पाकिस्तानी लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, तो हम मिल के इनको कोई एक ऐसा स्टार्टअप, एक ऐसा बूस्ट और एक ऐसी चीज़ें वो करें जिसके अंदर जो है हमारी अपनी प्रोडक्ट जो है उसका एक नाम हो, और जितने भी अराउंड ग्लोब के अराउंड हमारे लोग मौजूद हैं, लाइक जैसे अभी सोएब ने बात की थी, ही इज़ इन जर्मनी, तो जर्मनी में भी बहुत सारे लोग हैं, फिर पाकिस्तान और मुख्तलिफ जगह पे। तो एक ऐसा चीज़ हो जिसके अंदर हम वाक़ई कोई ना कोई कॉन्क्रीट बात करें, क्योंकि पिछले सालों से हम काफ़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम जो है कोई एक चीज़ नहीं कर रहे। सॉरी नवाज़ भाई आपका टाइम लिया, बस मैंने ये कहा था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं तो वो भी सवाल कर लें तो बेहतर है और अच्छा होगा।
थैंक यू। जी थैंक यू सो मच सबीर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। बेसिकली आप माशाल्लाह हमारे ग्रुप में भी हैं और हमारे सब सब आप एड हैं। हम वक्तन फवक्तन साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस तो लोगों के अंदर जितना हो सकता है हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बेसिकली क्लाउड के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है कि देखें आजकल हमारा तमाम तर चीज़ें जब हम मोबाइल फ़ोन पहले दिन परचेज करते हैं तो हमारा पहला अकाउंट ही क्लाउड के ऊपर ही बन जाता है। इट्स मीन्स कि हमारा तमाम तर डेटा हमारा क्लाउड पे शिफ्ट हो रहा है। तो अब ये चैलेंजेस हमारे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि इन केस अल्लाह ना करे किसी का अगर क्लाउड अकाउंट हैक हो जाता है, इट्स मीन कि उसकी तमाम तर जितनी भी क्रेडेंशियल्स हैं वो तो मतलब कि यूँ समझिए कि चली गई उस हैकर के पास। तो उससे हमें निपटने के लिए कौन से ऐसे इब्तदाई मराहल से गुजरना पड़ेगा, या अगर इन केस ये हो जाता है इंसिडेंट तो कौन सी ऐसी हमारी रिस्पॉन्स टीम होगी जो इमीडिएटली हमारे उस अकाउंट को रिकवर करवाने में मदद कर सके और हमारे डेटा को सिक्योर करने में मदद कर सके? थैंक यू सर। वेल यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी आती है जो आपका डेटा सेव कर रहा है, लाइक इन दिस केस जहाँ पे आप अकाउंट बना रहे हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ईयू की रेगुलेशन के बारे में बताता हूँ। ईयू यहाँ पे अभी न्यू डायरेक्टिव भी ला रहा है अक्टूबर से, जो ऑल ईयू कंट्रीज में वैलिडेट हो जाएगा, जिसके तहत ये होता है कि अगर आपका सॉफ्टवेयर में कोई ब्रीच होता है तो विद इन 72 आवर्स आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को बताना होगा एज अ कंपनी, एज अ वेंडर, कि आपका सॉफ्टवेयर ब्रीच हो चुका है। उससे ये होगा कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज उन सब यूजर्स को, वो आपकी ब्रीच को वेरीफाई करेंगे और आपको विद इन कुछ आवर्स का टाइम देंगे ताकि आप सब यूजर्स को अप्रोच कर सकें और उनको बता सकें कि ये ब्रीच हो चुका है, काइंडली आप अपना यूजर नेम पासवर्ड और वट एवर इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर लें, ताकि जो हैकर्स के पास आपका इंपॉर्टेंट एक्सेस गया है वो रिवोक हो सके। तो ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही उसकी जाती है जहाँ पे आपने डाटा स्टोर करवाया। सेकंड, एवरी कंट्री में एक प्रॉपर गवर्नमेंट बॉडी लेवल पे एक काम होता है जिसमें वो ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं आपकी प्रॉब्लम को और आपको बता सकते हैं कि आप क्या करें। तो एज सच अभी जेनेरिक बॉडी पाकिस्तान में आई डोंट थिंक एग्जिस्ट करती है। तो बेस्ट वे यही हो सकता है कि अगर तो आप एक इंटरप्राइज हैं या एक कॉर्पोरेट हैं तो आपकी अपनी सिक्योरिटी टीम होनी चाहिए जो कि आपके एम्प्लॉय डाटा और आपके पर्सनल डाटा को टेक ओवर करे, और सेकंड आपको जिस वेंडर में ब्रीच हुआ है वो आपको अलर्ट कर सके। और एज अ इंडिविजुअल आई डोंट थिंक ऐसी हमारे पास अभी तक कोई बॉडी है पाकिस्तान में जो आपको इस किस्म की हेल्प कर सकेगी एक्सेप्ट द वेंडर विच इज डीलिंग विद योर डाटा। दाऊद भाई, मुझे लग रहा है कि I think we have 44 minutes. I remember you just mentioned, and Dr. Shah mentioned, you have a couple of slides. So why not just go through on those slides? So maybe there are questions we have in our mind. We will get answers, and we will explore a little bit your product. So Daud, if you would like to share your screen, Bilal bhai, if you can hold your question for a couple of minutes, if it is okay. ठीक है जी, sure. Thank you. Daud. Or if it's really quick question, let's do it and then let's go to slides. Sure, Mr. Adnan, I have a question related to the vulnerabilities regarding, when we are talking about the IoT devices. So we are focusing on the administrative controls, likewise, as Sabir has told us, there's a lots of guys who deals with the pen testing. So we have to have the main focused areas, likewise, how we deal with the databases. Either it will be creating the text files or you will have a unstructured database as well for controlling or managing this IoTs. Is this question to me? Yeah, I have a question I can repeat. Okay. Do we have a mechanism by which we can have, syslog servers? Yeah, I mean, if I answer your question, so for example, for IoT devices, the product that I was going to introduce, which is typically that focus on IoT devices. So this firewall has a support of device identification. I mean, it provides a complete transparency to your network. If any IoT device that connects to your network, normally which admins don't know if any device comes with network. So we do have all these feature identification and profiling of these devices. So now, if you talk about integrating the syslog integration is related to SIEM solution. So if you want to have a syslog of any kind of IoT device, then that syslog can be pulled by a SIEM server, or maybe it can be pushed by a SIEM agent from the device toward the SIEM server, and all those anomalies and those alerts can be notified through that SIEM server. Ahmed Zulkarnain, I think your voice is breaking. Right now is okay? Yeah, it's fine Yeah. now. Okay. As you know that all the services, firewall services, when we talk about Palo or Splunk, Yeah. they provide the IoT administrative controls. So obviously we obviously will be using the syslog server.
So this question, obviously, I'm relating to those devices who has this controls. So your application will relate that as you talk about you are working on the scanner. Yeah, if I Obviously, give you, scanner. I can show you my demo. I have a small video in that demo. You can see that we have an application interface where any device that comes into your network can be monitored, can be controlled, can be registered through very simple mobile application. Or same like it will be work for the cloud. Well, yeah, I mean, cloud is not a cloud-based; it's a network-based solution. It's not. I mean, we are not having any kind of support from the cloud. Okay. It will be working for the commodities like hardware. Well, I mean, it's a kind of a network device. So, I mean, any IoT device that is connected to your network will be visible to the application. So you can have the complete visibility of all the devices onto your network on your smartphone by display. Okay. And how can we get or download your application Yeah, scanner? it's available on the Google Play Store. It's available on Apple Store, so you can find this application from any store. Okay. Okay. Thank you, Dr. Sir. Thank you. Yeah. Well. So can you guys see my screen, right? Yes, we can see. Thank you. Okay. Meanwhile, if you have any question, feel free to interrupt me, and let's do it. Okay. So I'll instead of sharing slide, I will directly show you the real live demo of what we are doing and what we have built so far. Okay. So feel free to ask me any question or interrupt me. No problem. Just 1 second. Okay, perfect. So what we were talking about was Woolert. Okay. As I told you, it's focused on monitoring the open source dependencies that you are using without any access to your servers or without any installation. So it's completely zero trust security product. We have more than hundreds of companies using this product so far. We have been featured by WASP, Cyclone DX. Those who don't know about Cyclone DX is the I would say organization building SBOM protocol. SBOM is like a protocol that says, give me the list of inventory that your software is composed of. So it's like, if I have to give you one software, I will give you also the list of ingredients that I'm using in that software. So we also cover SBOMs, so we can easily identify and monitor all of your ingredients that your software is built of. So Woolert has two main use cases. One, if you want to track open source using your application. Other use cases, if you have been given a software by some vendor and you want to keep an eye on the components they have used to build that software, so you can also monitor their components easily. Okay. We have also made a playground, which I'm just going to show you. Okay. Here you can easily come and upload any of the file. We support almost all of the programming languages. Upload any file of your choice, any SBOM, any BOM, any SPDX BOM. We also cover C, C++ programming languages, Java, PHP, Python, almost all of the languages. And with this playground, you can just upload the manifest file. For example, let's do a quick demo in real time. For example, for Java, my package manager is POM. Okay. I'll just upload my file. Okay, and it will do a real-time scan of my thousands of open source packages I'm using within this Java file. Okay, it's doing real-time scan, and you can see in my software, which is based on Java, it identified one vulnerable package that has the critical risk vulnerability inside my software, and unfortunately this vulnerability is not patched this day. Okay, so if you want to do more research on this vulnerability, for example, it will tell you a lot of other details. What is CVE? What's the CVS core? When it was disclosed? What's the background? What is vulnerability detail? How you can fix it? And if you cannot fix, what's the workaround? What we're talking about conclusion? And sometimes you also require some questions like, what is Mitre? What is this vulnerability? So we put a lot of efforts in writing this content for each vulnerability, each CVE. Then we have our vulnerability database that I was talking about. It's completely unique database with rich of vulnerabilities related to open source packages. So you cannot search like every vulnerability here. It is focused on open source vulnerabilities. So far we have more than 76,000 vulnerabilities, and each vulnerability is unique to its content. You can easily search whatever you want. You can search with CVE, you can search with name of the component, anything. It will give you results in literally a few seconds. For example, if I search for jQuery, okay, it will give me all vulnerabilities that has something with jQuery. Okay. Then we have made this dashboard. You can easily go to this dashboard by just clicking here, dashboard or dashboard preview. Okay. For example, I clicked on here. This is demo dashboard. It will open for you automatically.
this is main dashboard. Our dashboard is divided into main dashboard and then application dashboard. Main dashboard is more focused on management or security team that just want to have a look on whole organization security in just one glance. Okay. For example, this dashboard is telling me in my company, I have total 3 applications, let's say, and unfortunately, all of them are vulnerable. Current risk of my company is critical. And at the moment in my company, in different applications, I have 10 vulnerable packages installed. And with those 10 different vulnerable packages, I have 14 active vulnerabilities at the moment active. And this is the breakdown of their severity: critical, moderate, high, low, etc. If I scroll down, it will tell me what are active vulnerabilities. So it's like list of vulnerabilities actively present. And if developer fixes, if developer updates application, automatically would move them to resolved. Developer does not need to do anything. Okay, it will just automatically move them to resolved. And this is the list of application. You see, every application has unique name. You name it. We don't know anything about IP server. We don't have any knowledge. It's completely your name. Okay. It will tell you more details, which of them are critical, high, what's the current risk of that application, and what's the vulnerability trend of your company. So whenever we find any change with any of your application, we take a snapshot of it. We take a picture of it. So for example, I started tracking with Bullet. I had 0 vulnerabilities. Then on 19th, I found more vulnerabilities in my application. Then developer fixes some, and then more came. So whenever there's a change, we take snapshot. And research snapshot was 8 January. Bullet monitors all of the components for 24/7. So it's like scanning. As soon as there is something new that is affecting your application, it will send you an alert. If I take you to application dashboard, you can easily go from here. For example, you can see it is telling me a lot of other information. Most above cards are same, so that is focused on one application. And same thing here. So telling me vulnerabilities that are present in this specific application, which of them are resolved, what is the scan history. This was the snapshot I was talking about. So I had 0 vulnerabilities, then 6, then because I fixed some, then new vulnerabilities came. So whenever there is a change, either you fix or either new vulnerabilities came, we take snapshot of it. Okay. Then you would ask, hey, how whenever we fix our application or we update our application, it's not like we will come again on this dashboard and upload again our manifest file or log file. No, Bullets is supported with CI/CD. We will provide you an API. It's already there, API documentation. With this API, you can easily integrate with this any CI/CD tool, and automatically you can send us your updated log file. And that will become part of your automation. Every time you develop application or you update something, it will automatically transfer to us. And that's it. We will, whatever you fix, we will automatically move your vulnerabilities from active to resolve. You don't need to do anything else. Then your new vulnerabilities or your new components that you have just integrated or fixed, we will keep on monitoring them for you. Okay. If we go forward, for each kind of snapshot, we produce a report. This is a report for each snapshot. For example, in this snapshot that was done on 20th of January, in my application, I had 14 vulnerabilities, and these are the list of vulnerabilities in that specific snapshot, so that you have a complete history of how your application grown in past period or past months. So you start from 0, then 4 came, and new vulnerabilities came. In this specific, as you can see, we have one vulnerability with the new tag. It is saying that previously my application has just these 3 vulnerabilities, and new vulnerability has been discovered, and this is that tag. So if I go to previous snapshot, I didn't have this vulnerability. So new tag is telling me this is something new with your new snapshot. Okay. And then we can again research on each vulnerability and see in detail how to fix, what's workaround, what is CVS score. But here's a quick summary of risk and patched and disclosure. It also tells you which version you are using, and that is vulnerable. So because sometimes you say, hey, I'm not using that version, but we really remove false positive. We only focus on the version you are using. We don't care about other versions. So for example, if you are using 3.4 version of this library, we will not alert you. You are being alerted because you are using the version that is being affected. As I was telling, our content is really unique. We provide, whenever possible, we provide code-based workaround. We provide how to fix. We provide details about vulnerability, background, and a lot of other details. Our pricing, if you are from Pakistan government and looking into this right now, just contact us, and we'd love to give you our enterprise version for a lot of months free of cost without any problem. That's our contribution. That's our promise to nation security. But in any case, if you are open source project, for you, all of the packages are free. Just get back to us and it will be given to you. If you are just startup, one application, it's free for you. Then we have pricing per application. If you have just basic 3 application, literally $33 per month. That's just 2 developers hours, so like 2 hours of development time. But in this cost, we are tracking thousands of your packages for 24/7. You can have thousands of users, you can have thousands of alert, you can have CI/CD integration support, and a lot of other features. And same thing for our pro, it will just add more features like open source compliance and etc. If you don't know about open source compliance,
what it says, like you are using thousands of components, and each component has some license like MIT, BSD, Apache. So some of those licenses does not allow you to use those components for commercial purposes or for closed source, for example. So we will tell you, hey, you are using this component, and that component does not allow you to sell this product commercially. So to save yourself from heavy government fines, we will give you a complete understanding of which of licensing you are using and which components are violating your license policy, your organization license policy. That's it. If you have any questions, just feel free to ask. Sorry, class, quick question. Where does your product sits on the CI/CD pipeline? Yeah, well, there are two steps where we can play a role on. First is when you are developing pushing something on production. So it can be our first step. So before the code or before the application goes to production, with our API, you can check easily if your current application or what you are pushing now is secure or not. So we will give you immediately result on the fly, and we'll tell you, hey, what you are pushing has some vulnerabilities and has these vulnerable packages. So you can break that pipeline and stop there. This is first step. And if you pass that, means your application is good. It has no vulnerable packages installed. The pipeline pass on, your application is deployed in production. The second step is monitoring. So whenever it passes, we will save your manifest file automatically, okay? And we will keep on monitoring your newly updated components, list of components. And automatically, we will send you alert whenever there is something new that is affecting you. Did I answer your question? Yeah, no, I'm a little bit confused. As you mean the pushing means is version controlling. That when you're pushing your code to your version controlling, and normally Docker files and all that stuff you do there manifest files. So it's just before you pushing like Jenkins or anywhere, and you Exactly. So the user, they needs to just push the code, and then you can after checking this thing, basically I'm imagining right now in my mind, and then you can dockerize your application, and then you can deploy. Is it that correct? Kind of that? Yeah, it really depends. Even if you don't use Docker, you can still use Bullard. For example, if you are pushing your code to, let's say, on your server, if you are deploying your code now, okay, and you know there are CI/CD, for example, Jenkins has several steps. So first step is this, second is this, and third, and if all of the checks are passed, then application will be deployed. So we can sit on the first step. If application is secure, then let it go. Okay, got it. Good. And who are your main competitors, and how you are the bit different from your competitors? Well, there are different other competitors like Sneak and Mand, and there are a lot of others. The biggest difference with us is like we are zero trust security. We does not require access to your code, so we have zero knowledge about your servers, your IP, your website. Even we are monitoring components for you, we have no idea where you are using this component, which is the website name, which is IP of your server. We have no knowledge. This is first biggest difference. Second, our content, we really focus to help developers to fix applications. We really put a lot of efforts to make it easy for developer to understand what's the priority, how they can fix it, and how they can apply patch. Okay. Then there are a lot of. I have a question. Like your part is scanning the third party or open source vulnerabilities through the these files. What about my code? I write on my Java class and I just create some vulnerability. Who's going to scan that? Okay. Well, as I told, we as a Bullard does not have any access to your code, so we have no knowledge about your custom classes. Okay. All we know about list of components you are using, so those should be open source. Regarding your code security, or I would say checking your code for vulnerabilities, we have other kind of services as the company. I think that's not part of this webinar, but we offer these kind of services to a lot of companies in UK. But as a Bullard, we have no knowledge about your servers or your code. Okay, perfect. I think Bilal, you have a question, and whenever I see this window, I saw your hand like this. Come on, man. जी अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल पैनलिस्ट से है a lot of talk has been done, or a lot of technical languages used, vulnerability, Java, firewalls, JS, jQuery, and whatnot, pen testing, everything. Okay, and we are talking about IoT devices, 25 billion IoT devices. मेरा सवाल ये आप लोगों से कि नॉन टेक्निकल बंदा like myself who doesn't know anything about technology, आप मुझे कैसे educate करेंगे?
जो कुछ अभी आपने बताया, आप डेवलपर लेवल पे बात कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट लेवल पे बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आप IoT डिवाइसेज एंड उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअल टेस्ट जो है वो तो यूजर पे है, उसको आपने सिक्योर करना है, ठीक है। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं एज एन एंड यूजर? Well, Bilal bhai, thank you for a really nice question. I would switch my language. Actually, Bilal bhai, each product or each कंपनी का एक डिफरेंट विजन होता है और एक डिफरेंट टारगेट होता है। अब इस स्पेसिफिक केस में इस कंपनी बुलेट का एक विजन ये है कि हमने जो एप्लीकेशन है उसको सिक्योर करना है, बिकॉज एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर सारा डाटा हैंडल कर रही है। एप्लीकेशन के अंदर लॉजिक होती है कि डाटा कैसे सिक्योर करना है, कहाँ सेव करना है। तो हमारा मेन फोकस है एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी और डेवलपर के लिए आसान बनाना उस सिक्योरिटी को। सो इस एप्लीकेशन और बुलेट का विजन है डेवलपर को आसानी में समझाना कि कैसे आप अपनी एप्लीकेशन को फिक्स कर सकते हैं। सो एज एन इंडिविजुअल, एप्लीकेशन की बात तो थोड़ी बात तो आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एप्लीकेशन लेवल पे आप बात कर रहे हैं, मगर एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, मैंने कुछ अर्सा पहले वाइबर इंस्टॉल किया, ठीक है। वाइबर को जब इंस्टॉल किया, उसने मुझे कहा डू यू वांट टू गिव कंसेंट टू थर्ड पार्टी कुकीज। मैंने कहा चल फॉर फन देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। आई काउंटेड 961 कंपनीज वर आस्किंग टू एक्सेस माय डाटा, ठीक है। दे वर इन बिटवीन जापान एंड अमेरिका, एनी कंट्री यू नेम इट, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उनके पास मेरे सिस्टम की एक्सेस है, उनका सिस्टम कितना सिक्योर है आई डोंट नो। उनके सॉफ्टवेयर, ये जो लिंक वाइबर दे रहा, वाइबर इज अ वेरी रेप्यूटेबल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मुझे अब एजुकेट कैसे कर रहे हैं एज एन एंड यूजर जो IoT डिवाइसेस यूज कर रहा है। अब डॉक्टर साहब ने बात की कि जी जो, बल्कि आपने बात की कि EU रेगुलेशंस आ रही हैं, आपका डिफॉल्ट पासवर्ड जो है वो चेंज होना चाहिए, हर चीज डिफरेंट होनी चाहिए। EU को साल डेकेड्स लगे थे GDPR लाने में, GDPR के 6 साल बाद ये वाली रेगुलेशन अभी आएगी, ठीक है। पाकिस्तान में जिसको अपना नाम उर्दू में लिखना नहीं आता, उसके पास IoT डिवाइसेस हैं, सर ठीक इसमें है। मैं आपको कमेंट करूंगा बिलाल साहब। तो अभी जैसे लेट्स से कि आप जो कोड की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का ज़ाहिर है कि आप टेक्निकल नॉलेज तो किसी के पास भी एज एंड यूजर तो टेक्निकल नॉलेज ही नहीं होती। टेक्निकल यूजर को तो एक जो यूजर इंटरफेस दिया जाता है, यूजर उसी को सिर्फ देखता है और उसी को यूज करता है ना। तो आई डोंट नो, अगर आप IoT डिवाइसेस की टिपिकली बात करेंगे तो IoT डिवाइसेस में भी थोड़ा सा कि जब मुझे मौका मिलता है तो मैं आपको छोटा सा एक हमारी एक डेमो वीडियो है, मैं उसमें दिखाऊंगा कि एक आम यूजर के लिए उसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग फीचर हो सकते हैं। और इसी तरह से चीजें आप जो है ना ज्यादा, सो पीपल आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस, यूजर इंटरफेस एंड लॉट ऑफ थिंग्स आर डन so that even without having any kind of a knowledge about the domain, so you can easily operate or easily use your smart devices or smart gadgets. आप So जब हम बात कर, व्हेन वी आर टॉकिंग के EU में आ रहा है कि यू मस्ट चेंज योर पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं होना चाहिए, हर डिवाइस का डिफरेंट होना चाहिए। हम जब पाकिस्तान की और मेरे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, हमें एज एन एंड यूजर आप कैसे एजुकेट करेंगे? आपका वो क्या प्लान है कि सर वो आप हमें एंड यूजर, आप इतने अच्छा, एक तो एंड यूजर अवेयरनेस और सेशन इस तरह की है, लेकिन ये आप अवेयरनेस से लोगों से नहीं फायदा होगा। एक्चुअली हम ये चीजें सारी एप्लीकेशन में लेके आ रहे। फॉर एग्जांपल जो मैं अपने IoT फायरवॉल की बात करता हूँ, तो IoT फायरवॉल में IoT डिवाइसेस की मैनेजमेंट, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी प्रोफाइलिंग, ये सारी चीजें दैट इज पार्ट ऑफ दैट एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन। और इवन डू यू दैट नॉट नीड एन एप्लीकेशन, क्वालिफाइड फायरवॉल no, एडमिनिस्ट्रेटर you टू don't मैनेज need दैट any पार्ट? knowledge. That's a very simple and easy to use application. You don't need to have any background knowledge. That is very simple, pretty simple application. I mean, normally मगर जो IoT डिवाइसेस हैं सर, जी मेरा जो क्वेश्चन है दैट इज जस्ट फॉर द अवेयरनेस कि जो जी IoT डिवाइसेस हैं, ठीक हाँ है, हाँ हाँ, मेनली दोज आर यूज्ड बाय द एंड यूजर। वॉशिंग मशीन इज exactly. यूज्ड बाय द एंड यूजर, एयर बिल्कुल ऐसे ही है, कंडीशन इज यूज्ड बाय द एंड यूजर, definitely डोरबेल इज definitely, यूज्ड बाय द एंड यूजर, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको जी आप जी बिल्कुल ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन दे रहे हैं, उनको आप बेसिक अवेयरनेस कैसे दे रहे हैं, स्पेशली ही। पाकिस्तान में। आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, आप जो स्पीकर हैं हमारे, उन्हें फंडिंग मिली है, गवर्नमेंट की एक एजेंसी बनी है। आर यू वर्किंग फॉर सम ग्राउंड रूट लेवल सिस्टम टू एजुकेट अनएजुकेटेड पर्सन लाइक मी कि यार इसको अगर आप नई डिवाइस ला रहे हो, कंपनी तो सेल कर रही है, ठीक जी है, जी कि exactly. जी ये इंटरनेट रिलेटेड, इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे आप, ठीक है। हम्म, जिस एंगल पे मैं आना चाह रहा हूँ कि एजुकेशन कहाँ पे, आप प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो उस टाइम आपके सक्सेसफुल होगी ना जब एंड यूजर जो है उसको यूज कर पाएगा, उससे वो मुस्तफीद होगा। मैं सर सिर्फ ये इसमें समझना चाह रहा जी, हूँ, मैं Bilal आई bhai, गॉट योर पॉइंट। Can I give your answer? प्लीज। Basically, sorry for interruption. बात यह है बिलाल भाई कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि एंड यूजर को कैसे मालूम होगा कि भाई क्या करना है। उसकी एग्जाम्पल जो मैं समझाऊं, मे बी आप उससे इतफाक करें या नहीं करें, कि जितना भी हमारे पास जो अवेयरनेस है वो इतनी नहीं है। हम अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन एवरी सेकंड वन इज यूजिंग एंड्रॉयड और यूजिंग टिकटॉक एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड he or she know about what is the firewall, how to block all these things. So नहीं, it दे is a डोंट नो matter इट, of दे time. डोंट नो इट, नो 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 नो, सॉरी, No, 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 आई no, no, no. लेट्स एग्री टू Uh, डिसएग्री, ठीक है ना। okay, उन्हें नहीं you पता। you can, you एंड्रॉइड can. पे इन 2018
ठीक है, ऐसी एप्स अवेलेबल थी गूगल स्टोर पे, which were actually spyware, and they were available for about 11 months, and the install rate was 29% on the global devices. That's a fact. So बिल्कुल can सही, I बिल्कुल सही can I कह रहे just chime in on this discussion? First of all, I really would like to say thank you, Bilal भाई. Bilal भाई जो है ये हमारे आयरलैंड के अंदर गुरु हैं, खास तौर पे नेटवर्किंग साइड पे, और बिलाल साहब की काफी रुपए बोर्ड रुस्तम भी है, है। सीईओज भी हैं. ये डिस्कशन इज वेरी सीरियस क्वेश्चन फ्रॉम बिलाल भाई. इसमें क्या मैं अनफॉर्चुनेटली एक कमेंट ऐड कर सकता हूँ, लिटरली स्मॉल कमेंट. जी जी बिलाल भाई, रियली आपका क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट है एज अ नेशन के हम कहाँ जा रहे हैं. जैसे आपने बताया कि एप्स ऐप स्टोर पे आ रही हैं और एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर हमें सिक्योरिटी की एजुकेशन नहीं है. तो आई गेस शायद आप इस मेरे कमेंट से इत्तेफाक करें ना करें, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. आई थिंक एज अ इंडिविजुअल, एज अ डायरेक्टिव और एज अ सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर, सॉफ्टवेयर इनोवेटर्स, हमें सॉफ्टवेयर वेंडर्स को जो ये एप्स बना रहे हैं, जिन्होंने एप्स बना के ऐप स्टोर पे अपलोड किए हैं, एज अ ऐप स्टोर ऑनर्स हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी इन एप्स पे नजर रखने के लिए और अपने कंज्यूमर को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए. आप एज अ कंज्यूमर एक एयर कंडीशनर लेते हैं घर में, तो आपको सिक्योरिटी की टेंशन नहीं होनी चाहिए. सिक्योरिटी जो जिसने एयर कंडीशनर बनाया, हमें उस पर फोर्स करना है कि आपने सिक्योर प्रोडक्ट देनी है, अदरवाइज यू कैन नॉट सेल इट. आई थिंक हमें ऑपोजिट सोचना होगा. इंस्टेड यूजर के लिए हमें प्रोडक्ट जो देनी है, हमें फोकस करना होगा कैसे उसके लिए आसान से आसान बनाए. इंस्टेड ऑफ कि आम यूजर सोच रहा हो, लाइक मेरी मदर सोच रही हूँ कि कैसे मैं अपनी फायरवॉल ऑन करूँ, उन्हें ये नहीं सोचना. उन्हें ये सिर्फ सोचना है कि मैंने मुझे 27 डिग्री चाहिए तो कैसे होगा, दैट्स इट. जो सिक्योरिटी पार्ट है वो वेंडर को सोचना चाहिए कि मुझे अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरा यूजर सिक्योर प्रोडक्ट ले. तो हमें एज अ दाऊद भाई आपकी गवर्नमेंट. बात बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा. और नवाज भाई, मैं बिल्कुल ही खामोश था, आपने इंट्रोडक्शन डिफरेंट एंगल का करवा दिया है. नहीं भाई. दाऊद भाई आप दाऊद भाई आप भी पाकिस्तान से हैं, मैं भी पाकिस्तान से हूँ, ज्यादातर यहाँ पे डेवलपर्स बैठे हुए हैं. ठीक है, आया कि हम अपनी कितनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं कि हम जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, हम किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को दे रहे हैं, उससे हम कहते हैं कि यार सपोर्ट बाय करो, और वो बाय नहीं करता, हम उसमें टाइम बम लगा देते हैं. हम अपनी कहाँ पे ड्यूटी पूरी कर रहे हैं? लेट्स बी ऑनेस्ट. सर बिल्कुल. बिलाल भाई, ठीक है, मैंने मैंने स्टार्ट में एक चीज कही थी कि ये डेवलपर है जो लैपटॉप ले रहा है, और वो शायद आपको भी फोन आते हो कि आपके पास जो है ना वो एंटीवायरस को सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है. ये बिल्कुल बात डेवलपर है ठीक है जो आपकी. जो 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 बेसिकली जो है ना वो एप्लीकेशन वो पूरा हार्डवेयर ले रहा है, और वो कहता है यार वर्ड का मुझे जो है ना कुछ हैक कॉपी चाहिए, और ये इसी डेवलपर ही चीज है. को पॉइंट आउट करते हुए नवाज भाई, बिल्कुल इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए, ये जो माइंडसेट है ना हमारा, हम स्टार्टअप्स में भी इन्वॉल्व हैं, हम इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारे इंक्यूबेटर्स आ रहे हैं. ठीक है, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स बहुत इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से भी आ रहे हैं. ठीक है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि आप आपने बड़ा एक नीश टॉपिक पकड़ा आप दोनों ने, सिक्योरिटी, आईओटी डिवाइसेस की सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी. ठीक है, इट्स अ नीश थिंग. मगर इसके साथ आप अगर इसको पायनियर के तौर पर ले रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, कि हम ये माइंडसेट को चेंज करें, या एज एक्यूमुलेटिव हम इस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, हम जितने इस ग्रुप में बैठे हुए हैं इस टाइम, हम में से किसी ने किसी ना किसी टाइम पे टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई ऐसी चुल मारी होगी कि क्लाइंट हमारे पास वापस आए एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, बिल्कुल. वो हमारे इग्नोरेंस के दिन थे या आपके आज के दिन है, हम जब लर्न कर रहे थे कहीं ना कहीं पे हमने ये सब किया हुआ है. एज अ नेशन वी आर मेंटली सिक. Really, ठीक है, I think this is what the next step we are going to come out from the sickness. बिलाल भाई, यस, इसीलिए आपका ये एफर्ट है. तो मैं ये सिर्फ पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इट्स वेरी पॉजिटिव. इसके साथ आप अगर एक चीज प्लान दें ना गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स को और यूथ को. ठीक है, यूथ सबसे बड़ी यूजर है ना आईओटी की. ठीक है, उनके लिए आप प्रोग्राम आप साथ लेकर आए. देखिए इसके लिए जो है ना, ये अभी हमारे साथ जो है ना डॉक्टर अमार साहब भी थे. एक एक सेपरेट एफर्ट इसके ऊपर हो रही है. ये जो एफर्ट जो अभी हम कर रहे हैं, ये इस विद इन दिस बाउंड्री लाइन, विद इन दिस कम्युनिटी, और मैं जिस कम्युनिटी के साथ इस वक्त मैं डील कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, दे आर स्टिल इग्नोरेंट. दे आर लिविंग इन यूरोप, दे आर लिविंग इन द एडवांस कंट्रीज, दे आर यूजिंग ऑल द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, बट दे आर स्टिल इग्नोरेंट. और ये एक छोटी सी एफर्ट है जिसमें हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. ये वी बिल्कुल आर ठीक है, मेकिंग एवरीवन क्यूरियस अबाउट दैट वन. और जैसे अप्रिशिएट इज आपको मच याद अप्रिशिएट. होगा बिलाल भाई, आपने लास्ट टाइम हम आपके साथ एक वेबिनार भी किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस भी किया था कि आओ, जी, ये पंगा है, और इस पंगे के ऊपर जो है ये हमें मल्टीपल एफर्ट मल्टीपल एंगल से करनी चाहिए. तो ये जो आपने अभी जो फीडबैक दिया है, मैं लाजमी तौर पे जो नेक्स्ट मीटिंग होगी हमारे साथ, मैं आप लोगों के साथ वो मीटिंग ज्वाइन भी करूंगा. बिलाल भाई को भी लेकर आऊंगा, और इंशाल्लाह वो जो नेशनल लेवल पे है, क्योंकि आप उस स्ट्रेटेजी को देख भी रहे हैं, तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे.
Believe me, this forum at this time is a highly skilled intellectuals, especially as is now. यहाँ पे जो जी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इट्स समथिंग एल्स। जी अस्सलाम नवाज भाई हमारे साथ अभी डॉक्टर नजीब भी हैं, ही इज फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। जी सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डॉक्टर नजीब साहब, साहब, वेलकम टू द फोरम। जी अस्सलाम वालेकुम। सबकी बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं पूरी प्रेजेंटेशन देख सका, लेकिन ये कि कुछ मुझे आइडिया वो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने। और साबिर रज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। ऑलरेडी यहाँ पर तो माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल पीपल बैठे हुए हैं। मैं दाऊद साहब की भी प्रेजेंटेशन देख रहा था, अच्छी IoT वगैरह से काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड दे दूँ। साबिर रज़ा ने आई डोंट नो कि पहले मेरे बारे में कुछ है या नहीं है। मैं खुद एनईडी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और हमारा R&D दोनों तरफ हमारा काम चल रहा है। लेकिन अदर देन मेरी जो रेगुलर एक्टिविटीज टीचिंग वगैरह है, उससे हटकर मेरा एक छोटा सा यहाँ पर जो सेटअप चल रहा है, जिसकी वजह से साबिर के साथ भी हमारा कनेक्शन हुआ था, वो मेरे कुछ कोर्सेज हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो हम यहाँ पर चला रहे हैं। और वो दो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज स्पेशली फॉर एग्जांपल डाटा साइंस के अंदर इस वक्त जो है वो हमारा काम अच्छा चल रहा है। और डाटा साइंस की फील्ड के अंदर हमने एक 1 ईयर PhD डिप्लोमा और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दोनों स्टार्ट किए हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊँ आपको कि वो सक्सेसफुल हमारा जो चल रहा है उसकी दो वजूहत है। एक तो ये कि हमने उसके ऊपर लिमिटेशन नहीं लगाई है, वी आर कॉलिंग और वी आर टेकिंग द पीपल फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, इवन अदर देयर प्रीवियस डिग्री फ्रॉम मेडिकल डोमेन, BBA, MBA, फ्रॉम एनीवन, कहीं से भी है तो हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और हम अपने कोर्स को लेके भी इस तरह से चल रहे हैं कि वी डोंट रिक्वायर कि यू हैव एनी बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर साइंस, हम उनको फ्रॉम 2+2 से लेके चलते हैं। तो वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट डोमेन और बहुत अच्छा चल रहा है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट के बैचेस चल रहे हैं, इस वक्त 6 बैच जो है वो हमारा चल रहा है। और उसकी एक सक्सेस स्टोरी से थोड़ी सी मैं ये शेयर करूंगा कि पीपल ने अपने डोमेन चेंज कर लिए वर्किंग के। इफ सिविल इंजीनियर था और ही वाज वरिंग अबाउट द जॉब और समथिंग, अर्बन इंजीनियरिंग में BE की डिग्री लेके परेशान बैठा हुआ था, लेकिन उसने हमारा डिप्लोमा किया और आज वो पता चला फिनलैंड के अंदर मजीद डाटा साइंस के अंदर किसी कंपनी के साथ काम कर रहा है, या पाकिस्तान के अंदर ही जो है वो अपवर्क से अपनी उसने प्रोफाइल बनाकर और डाटा साइंस के अंदर जो है प्रोजेक्ट कर रहा है। तो हमें इस बात से खुशी हो रही है कि हाँ भाई ठीक है, हमने एक जो थोड़ा सा ये इनिशिएटिव लिया और वो सक्सेसफुल है। सेकंड भी मैं थोड़ा सा, अगर इफ आई एम नॉट टेकिंग टाइम, सो मैं एक चीज और कंट्रीब्यूट करूँ इसके अंदर। एक और उसका स्टेप ये था, ये जो PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था, इस ये एक्चुअली NED सॉरी HEC से, पाकिस्तान के हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसलिए इसकी कुछ कंडीशन थी कि 14 इयर्स एजुकेशन होनी चाहिए जो लोग PhD डिप्लोमा कर रहे हैं। तो वो एक बैरियर था। लेकिन ये कि फिर हमने उस बैरियर को किस तरह से खत्म किया कि वी इंट्रोड्यूस UGD, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द HEC, बट उसकी कंडीशन क्या है कि इंटरमीडिएट के लोगों को भी हमने कॉल कर लिया कि अगर आपने इंटर किया हुआ है आइदर अगेन इन एनी डिसिप्लिन, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मेडिकल, from in any domain. So we have started almost same PGD course, but little bit थोड़ा सा उसको कम कर दिया हमने, उसकी कंडेंस को थोड़ा सा लाइट कर दिया नोट्स को, और हमने उनको भी कॉल कर दिया। तो वो भी हमारा बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है। और इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो इधर उधर घूमता रहता था कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रही है, या उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, आगे किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जब उसका एडमिशन नहीं हुआ था तो दे वर वरिंग अबाउट देयर फ्यूचर, हमने उनको जो ये UGT प्रोग्राम शुरू किया, तो वी आर वेरी सक्सेसफुल इन दैट डोमेन एज वेल। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। टुडे अ न्यू बैच वाज स्टार्टेड UGT प्रोग्राम, और ये 5th बैच है जिसमें स्टार्ट हुआ। और आज ही मेरी उनके साथ जब क्लास हुई तो मोर देन 50 स्टूडेंट का ये वाला बैच आज हमारा नया बैच शुरू हुआ है। तो ये थोड़ा सा बस मैंने अपने बारे में माशाल्लाह, आपको नहीं बताया नहीं, कि ये काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। अगेन डॉक्टर नजीब साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। और लाजमी तौर पे वी विल लर्न फ्रॉम योरसेल्फ। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई कैन सी आतिफ बंगश एंड अमार जाफरी साहब जस्ट रेज अ हैंड, and I got a ping from Dr. Shah. I think his battery is just discharged, so he will be joining in the meantime. So I don't know, Amar Saab, Atif Saab, whoever wanna go first. You try yourself. अच्छा, जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आतिफ आतिफ से मैं लिबर्टी ले सकता हूँ, सॉरी आतिफ। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि मैं नजीब साहब से, मेरा सवाल है, नजीब साहब गुजारिश ये है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। मैं समझता हूँ कि एजेंट्स ऑफ चेंज वही होते हैं जो मुश्किल रास्तों पर रास्ता तलाश करते हैं। आपने बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया कि PGD की रिस्ट्रिक्शन को आपने UGD में खत्म किया। ये फरमाइए, क्या ये आपका प्रोग्राम ऑनलाइन है या ये फिजिकल है? जी, बहुत अच्छी बात। ये मैंने टाइम की वजह से बहुत डिटेल नहीं दी, बट ये हाइब्रिड है। एक्चुअली इसमें फिजिकल क्लासेस भी हो रही हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी हो रही हैं। और इस प्रोग्राम की एक सक्सेस ये भी है कि पीपल फ्रॉम अब्रॉड दे आर इनरोलिंग इन दिस प्रोग्राम। जर्मनी से, सऊदी अरब से, दुबई से बहुत सारे लोग हैं ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो इसकी क्लासेस NED यूनिवर्सिटी में भी हो रही हैं। सेम टाइम के अंदर हम अपना ऑनलाइन सेशन जो है वो भी चल रहा होता है। तो ये चीज बिल्कुल। बोर्ड टीचिंग नहीं है, मार जाफरी साहब, कि तो क्लासरूम में ना ये इट्स नॉट कन्वेंशनल टीचिंग।
कंप्यूटर के ऊपर सब लोगों को हम ऑन कर देते हैं कि जी आप अपना कंप्यूटर ऑन कर लें, हमारे सामने बैठ जाएं। जो लोग ऑनलाइन है वो अपने घरों में अपने कंप्यूटर ऑन करके बैठे हैं, और टीचर जो है वो उनको लाइव सेशन के अंदर जो है वो हैंड्स ऑन जो है ये सारे के सारे कोर्सेज करा रहे हैं, जिसके अंदर पाइथन का कोर्स पहला लेके चलते हैं हम आमतौर पे, एक डाटा विजुअलाइजेशन का कोर्स है, एक बिजनेस इंटेलिजेंस का कोर्स है, मशीन लर्निंग का कोर्स है और डीप लर्निंग का कोर्स है। ये 5 कोर्सेज जो है वो हम लोग करा रहे हैं, और ये सारे के सारे हैंड्स ऑन कोर्सेज। ये आपका जो आपका ये जो यूजीडी का आप कह रहे हैं डिप्लोमा जी है, ये एनईडी का देंगे आप ना? जी, एनईडी यूनिवर्सिटी का देंगे जी, बिल्कुल। बस ठीक है। अब बस काइंडली अपना नंबर अगर मुझे शेयर कर दे, मैं भी आपको लिख देता हूँ। अली वेरी थैंकफुल, डिटेल में आपसे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। एंड लेट मी टेल यू डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता आपकी मेरी मुलाकात हुई है कि नहीं। अमेजिंग हो काम चुकी आपने है हमारी मुलाकात, चलिए एनईडी में भी बस हो चुकी है और ऑनलाइन भी 2-3 दफा हमारी आई मीटिंग्स के एम अंदर रियली हो चुकी ऑनर्ड, आई है। एम रियली ऑनर्ड कि अगर मैं ये सवाल 10 लोगों से करूँ तो 8 के जवाब वही मिलता है जो मुझे आपने दिया। आई एम रियली ऑनर्ड। इसके आप अलावा माशाल्लाह बड़ी पॉपुलर शख्सियत है, इसलिए सबका नहीं जवाब एक नहीं ही होता है जी, नहीं नहीं, प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका। बस मैं अभी आपसे रब्ता करके आपसे बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी आतिफ भाई, उसके बाद डॉक्टर शाशीर, सॉरी इफ आई, आतिफ भाई, व्हाट इज योर डॉक्टर I शहीद, think डॉक्टर Dr. शहीद। Shahid. Yeah, Dr. जी थैंक यू वेरी मच। मैं असल में सारा कुछ सुन रहा था, और क्योंकि मैं एक बेसिकली बिजनेसमैन हूँ, और बिजनेस उस लिहाज से बात करूंगा जिसमें कि बिलाल ने किया। मैं ये चीज़, ये सारी प्रेजेंटेशन और सब कुछ देखने में दोनों हजरात से मेरा ये सवाल है कि अ, इनकी टारगेट मार्केट कौन सी है? ये इन्होंने जो ये प्रोडक्ट्स डेवलप किया आईओटी की जो है, ये कौन सी प्रोडक्ट्स, कौन सी आईओटी प्रोडक्ट्स को सामने रखकर इन्होंने डेवलप किए हैं, और क्या इनका कौन सी मार्केट को रिसर्च किया है, ईयू को किया है या पाकिस्तान को किया है, उस हिसाब से इन्होंने ये डेवलप किए हैं। और इनकी जो इसकी जो टारगेट मार्केट है, देखिए मेरे मेरे ख्याल से अभी तक जितना मैंने देखा है, आईओटी जो है वो सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हुए भी और ना जानते हुए भी। जो कि एंड यूजर है उसको पता ही नहीं है कि वो उसकी जो डिवाइस है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुई है, और ना वो जानना चाहता है मेरी जितनी रिसर्च है, वो सिर्फ उसको यूज करना चाहता है। तो उसको ये अवेयरनेस नहीं होगी कि मैं ये वाला एप्पल से या iOS से कहीं से डाउनलोड कर लूँ, ऐप कर लूँ, जिसमें कि वॉशिंग मशीन हो गया या आतिफ बहुत सारी भाई, ऐसी डिवाइसेस। जी जी हो सकता है कि आपका क्वेश्चन जो है ना वो राइट बंदे तक ना पहुंचे। डॉक्टर शाह साहब जो है उनका कंप्यूटर बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हो गई है, तो वो अभी ऑनलाइन नहीं है। ठीक। तो चले बट अब आई विल क्या हो सकता है, कनेक्ट मैं विद तो यू, दिस इज अ गुड हाँ क्वेश्चन, वो ये अनलेस कि ये अखलाक वांट्स टू गिव बहुत दिस सारी आंसर। ऐसी क्लोज, मेरे ख्याल से मैं अब बात कंप्लीट कर लेता हूँ, बाकी लोग इससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आप की जो एंड यूजर, इन लोगों की टारगेट मार्केट नहीं है। इन लोगों की टारगेट मार्केट जैसे कि इतलाक है, उसकी जो है वो डेवलपर्स और डेवलपमेंट हाउसेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं, और जो वो हैं उनकी वेंडर्स हैं जो कि आईओटी डिवाइसेस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज ईयू को देखते हुए, जहाँ जहाँ ईयू में इस क्लिनिकल डिवाइसेस है, जो कि हेल्थ केयर डिवाइसेस हैं, जो कि आईओटी पे शिफ्ट हो रही है सारी। अब उनमें एंड यूजर को या एक आम डॉक्टर या नर्स को ये नहीं पता लगता कि ये डिवाइसेस का कौन सा इंटरफेस है जहाँ से मैं ये वाला फायरवॉल इंस्टॉल कर दूँ। तो मेरा ख्याल है इनको कांटेक्ट करना होगा उन वेंडर्स को। तो मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, पता नहीं मैं ये है चीज या नहीं है, कि इनकी एंड यूजर, इनकी इतना मैं श्योर हो गया हूँ कि इनकी जो टारगेट मार्केट है वो एंड यूजर नहीं है। थैंक यू वेरी जी डॉक्टर शहीद वकार साहब, सॉरी आपने हैंड रेज किया है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत पहले तो आप लोगों का मशहूर हूँ। that Sabir Raza basically called me to join this webinar, and I have already like मैंने बीच में ज्वाइन किया था, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया जो आतिफ बात कर रहे हैं अभी। सो इट्स राइट, आई थिंक ही इज करेक्टिंग राइट थिंग कि ये ऐसा ही कुछ है जो अभी इससे पहले बात हो रही थी, थोड़ी सी मैंने सुनी थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ पहली दफा ज्वाइन हुआ हूँ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I'm basically Dr. Shahir, and my background is totally IT since 25 years. I have done my first PhD in artificial intelligence 2004, and it was started in 1999. So उस जमाने में लोगों को पता ही नहीं था AI क्या चीज़ है, and I'm basically secondly PhD wise in cyber security. So basically मैं basically एक technologist हूँ और एक educationalist हूँ, and I'm also associated with many bodies while working. मैं ये जो बात अभी बीच में थोड़ी लोगों ने की कि माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है, तो अमार साहब भी मौजूद है यहाँ पे। मैं एक फ्रेमवर्क बना चुका हूँ उसको, जो कि पेटेंट हो चुका है और ऑलरेडी कॉपीराइट हो चुका है, और उसकी बॉडी इस्टेब्लिश कर चुका हूँ मैं यूके में।
एंड बेसिकली मैंने उसको अभी तक अनाउंस इसलिए नहीं किया है कि मैं उस पर कुछ काम बाकी रह गया है थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह नियर सून बेसिकली वो है ही यही कि हाउ वी कैन चेंज द माइंडसेट ऑफ द यूथ to take the cybersecurity in positive manner. Either they are going to, uh, they're going to learn the ethical hacking, but they're not going to know about what is the meaning of that thing and where they are going to use. And we are going to teach them that what is ethical hacking. So हम उनके साथ एक बाइंडिंग करते हैं कि आप हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन करें कि यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट नेगेटिवली. And what is the purpose that you have to go for penetration testing and you can defensive or you can go for defensive. But हम उसको कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, अब उस माइंड सेट को चेंज करने के लिए जो मेरे पास एरिया है वो बहुत बहुत नीचे लेवल से मैं लेकर जा रहा हूँ, स्कूलिंग लेवल से लेकर जा रहा हूँ, और वहीं से हम उसको चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास अब नए लोगों को हम मेरे ख्याल से उनके न्यूरॉन्स को चेंज करना बड़ा मुश्किल है, या उनको समझाएंगे भाई खुदा के लिए इसको इस्तेमाल ठीक करो. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो बिल्कुल ऐसा ही है कि आई डोंट नो हु द मेन स्पीकर ऑफ दिस प्रोग्राम जो पहले आईओटी के हवाले से बात कर रहे थे. सो आईओटी लोग, अब ये बात बिल्कुल सही है कि लोग जो है वो आईओटी का इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनको कर्ज भी नहीं है. जैसे कि हम गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी का इस्तेमाल हम करे जा रहे हैं, हमें नहीं पता कि गाड़ी के अंदर क्या हो रहा है अंदर इंटरनली. ऐसे ही हम डिवाइसेस को भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं. तो मेरी दरख्वास्त ये है कि जो भी वेंडर्स हैं आप उनको टारगेट मार्केट कर रहे हैं और उन वेंडर्स को आप कहें कि भाई जो आप अपनी डिवाइसेस दे रहे हैं उसकी कंप्लीट रेसिपी भी दे दें सेटिंग्स की, ताकि जैसे एक फेसबुक यूजर है या एक टिकटॉक यूजर है, उसको नहीं पता कि उसकी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है और उसकी प्राइवेसी को कैसे मैनेज किया जाएगा. उसको बताना पड़ता है कि भाई घर में भी खवातीन यूज कर रही हैं, दे डोंट नो व्हाट आर द प्राइवेसी इन द फेसबुक एंड इट इज वेरी जनरलाइज्ड. 20 ईयर से लोग उसको यूज कर रहे हैं एंड दे डजंट नो अबाउट इट व्हाट एक्चुअली द प्राइवेसी ऑफ एंड हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इट. उसकी वर्नेबिलिटीज अपनी जगह मौजूद है और उस पर कई वाकयात हुए हैं, उस पर कई रेडिकलाइजेशन है, मेरे पेपर्स हैं, मैंने खुद उस पर बड़ी रिसर्च की है. तो मैं देख रहा हूँ कि उस फेसबुक के ऊपर कितनी रेडिकलाइजेशन हो रही है. So that's basically the main key, that when you are going to talk with the vendors, you tell them that you have to tell the measures, precautionary measures of that IoT devices and how the basic settings are needed to work on it. अच्छा, इसमें कुछ और चीजें जो मेरा सजेशन है कि आप इंश्योर करें कि आप प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का क्या डिफरेंस है. ठीक है, और उनको ये पता नहीं है कि व्हाट इज डॉकर एंड व्हाट इज अदर थिंग्स. ठीक है, तो उनको ये प्राइवेट पब्लिक समझ में आ जाएगा. अच्छा, अब प्राइवेट क्लाउड से क्या वो वेंडर से वो चीज ले रहे हैं या पब्लिक क्लाउड से ले रहे हैं, और वो प्राइवेट क्लाउड कहाँ है और उसके क्या एसएलएस हैं, तो यकीनी तौर पर पब्लिश होते हैं और उसको पब्लिश लेवल पे कुछ चीजें उठा के यूजर को बताने की जरूरत है कि दिस इज द इंश्योरिटी ऑफ दिस सिक्योरिटी, that you are not going to be compromised and anything else. ठीक है, सो वहां से कुछ पॉइंट्स उठा के हमें लोगों को बताने होंगे कि भाई ये चीजें हैं जिसको आप अश्योर कर सकते हैं और आप जो है वो इसके ऊपर मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम कोई डिवाइस एक्टिव कर रहे हैं तो ये इट्स अ सिक्योर क्लाउड. इवन दो के दुनिया जा रही है क्लाउड पे, मैंने भी एक आर्टिकल लिख दिया था क्लाउड पे कि इट्स वेरी डेंजरस, तो मुझे रोक दिया वहां से ऑरेकल ने, कहना भाई क्या कर रहे हो खुदा के लिए, ऐसा मत करो. तो वो क्लाउड तो कहीं से भी सिक्योर हो ही नहीं सकता. इधर व्हेन इज गोइंग टू बी डेटा सेंटर, तो कौन सा डेटा सेंटर जो सिक्योर करेगा उसको. मगर ऑब्वियसली उसके अंदर जो कंटेनर लेवल्स हैं यानी डॉकआउट्स हैं या और अब डीप डाउन और भी वर्चुअल मशीन्स के नए वर्जन आ गए हैं, वो बहुत ही हम उसको जो है ना सिक्योर बना सकते हैं और यूजर को लिटरेट कर सकते हैं कि आपके लिए ये एज अ प्राइवेट बिल्कुल क्लाउड है. आप अब जैसे हम अपनी आज के दौर में एक एनआईसी बनाते हैं, लोगों को लिटरेट करने की जरूरत है कि भाई क्लाउड पर भी ना आपको एक कंटेनर लेने की जरूरत है और उस कंटेनर में आप सब कुछ चलाएं, वो आपका होगा और आप इसके अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकता. ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, पाकिस्तानी कौम को टाइम लगेगा, यूरोपियंस नो इट, यूके के पीपल भी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. आई हैव लिव्ड इन 11 इयर्स इन यूके, वहां पर तो कुछ पूछता ही नहीं, कोई यूजर को तो कुछ पता ही नहीं, आप फिर भी बात कर रहे हैं पाकिस्तानी बच्चे. वहां तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, वहां तो यूजर्स को कुछ पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. तो देखिए लिटरेटेड, डॉक्टर आई एम साहब, सॉरी. ये मैं जो आपकी बात को थोड़ा सा एनहांस कर रहा हूँ. ये जो हम आईपीएप आयरिश पाकिस्तानी आईसीटी प्रोफेशनल्स ये जो एक एफर्ट कर रहे हैं, इसके अंदर ऑब्वियसली तौर पे हमारी टारगेट कम्युनिटी तो आईसीटी के लोग हैं. और हम सब कहीं ना कहीं जो एसएमईज हैं वो कहीं ना कहीं से छोटी मोटी एप्लीकेशन बनवाते हैं. वो कितनी दफा उनसे जो है ना वो सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसके अंदर जीरो वनरेबिलिटीज है.
वो कहाँ पे उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है मुझे फला कंपनी की जो है वो सर्टिफिकेशन दो कि वो उसको मॉनिटर कर रही है। अब ये तो एसएमईज की बात कर रहा हूँ, ये हमें अवेयरनेस चाहिए। मैं पिछले 20 साल से आईसीटी सेक्टर के अंदर हूँ और मुझे पता है कि मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, 2010 में हमने एचएसबीसी को एक एप्लीकेशन दी, उन्होंने कोई वल्नरेबिलिटी, कोई स्कैन, कोई चेक चीज नहीं मांगी। उसके बाद एक वेरा कोड के नाम से जो है ना एक प्रोडक्ट वो उन तक पहुंची। उन्होंने कहा कि कोई भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो अपने नेटवर्क के अंदर, यू हैव टू बी गॉन थ्रू द वेरा कोड। 6 बार लगे उसके नेक्स्ट वर्जन के लिए, क्योंकि वेरा कोड ने तो फिर वही जो अभी धोत भाई दिखा रहे हैं तहस नहस कर दी ना। तो उसने फिर आपको लंबी लिस्ट दे दी। अब मसला ये है कि एक तो वो जो यूजर है, वो एक तो यूजर घर में बैठा है, एक यूजर है जो बना रहा है एप्लीकेशन। जो बिलाल भाई ने कहा, जो बनाने वाला है उसको भी नहीं पता चल रहा कि वो क्या बना रहा है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ये वो अपनी वेबसाइटें चलवा रहे हैं, वेबसाइटें दे रहे हैं, उसके अंदर फॉर्म दे बिल्कुल रहे आप हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बात को मैं आपको इंडोर्स करूंगा, इसलिए कि मैं खुद एक डेवलपर हूँ, लगभग मुझे भी पता है, ठीक है। और मैं बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ, इवन कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ बल्कि काम कराया मैंने। तो मुझे ये आइडिया है कि हमारा जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफिसर है, उसको तो पता ही नहीं होता था कि सिक्योरिटी क्या है एक जमाने में, ठीक एग्जैक्टली। है। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको सही बात बता रहा हूँ मैं ये। अच्छा, मैं आई एम बेसिकली सीआईएसएसपी सर्टिफाइड इन 2004, ठीक है। और उस जमाने से मैं उनको कह रहा हूँ कि भाई, जो असल कॉम्प्रोमाइजेशन है वो नेटवर्क पे नहीं है, वो सॉफ्टवेयर की वजह से है। और ये आई बात एग्री। साबित हो गई 2017 में जाके, कि जब उन्होंने सर्वे कराया तो उनको पता चला कि 90% जो आपकी अटैक्स है वो ड्यू टू लाइक सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटीज की वजह से है। अच्छा, सॉफ्टवेयर वर्नेबिलिटी, अच्छा वर्नेबिलिटी कभी जीरो हो नहीं सकती, ये तो ये आप सब जानते हैं कि आप पोर्ट खोलेंगे, पोर्ट खोलेंगे, अपने पोर्ट के बगैर दरवाजा खोलेगा नहीं तो आएंगे जाएंगे कहाँ से? तो वर्नेबिलिटी तो जीरो कभी हो नहीं सकती, लेकिन उसके प्रिकॉशनरी मेजर जरूर है, ठीक है। हमें तो पहले ये लिटरेट करने की जरूरत है कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है। यस। हमें तो वो बेसिक लेवल पे लोगों को बताने की जरूरत है। तो इसके लिए बड़ा मैसिव लेवल के ऊपर सर वेबिनार सेमिनार्स करने होंगे। मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया है, आई एम सॉरी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम एज अ प्रोफेशनल, हम लोगों की सबकी ड्यूटी है। माई सेल्फ आई बीन वर्किंग एज अ कंसल्टेंट, लेकिन मैं, मेरा अपना एक इदारा है 3D एजुकेटर के नाम से, जो बेसिकली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में 25 साल से इन्वॉल्व है। और हम कराते ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। सीसा हो गई, सिस्प हो गई, ये सब मैंने ही पाकिस्तान में लॉन्च की है, बहुत सारी सर्टिफिकेशन 2005 के बाद हाँ, से। तो लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर, थोड़ा सा जो बिल्कुल ये जो ना इंशाल्लाह, क्योंकि ये करने का मकसद यही था कि आप लोग के साथ ऑन बोर्ड होके और माशाल्लाह फिर हम आगे इस पे इंशाल्लाह डिटेल में बात कर रहे होंगे। अभी बिल्कुल जो ये था कि हमने जो है ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट को, बेसिकली इसके पीछे पर्पस ये है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो है वो सामने आई जाए और इस तरह के जितने स्टार्टअप हैं वो हम सब मिलके उसको प्रमोट करें। तो नवाज भाई आप कंटिन्यू कर लें, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जो ना वो हम कर लेंगे, बात बात होती रहेगी इंशाल्लाह आगे। ठीक हो ठीक है गया। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आई एम जस्ट लुकिंग एट Dr. Shah. I think he is still has some issues. I have seen a hand from Atik. Atik bhai, you have a question? You want to share anything? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम अतीक आमिर है और मैं लाइक 1998 से यानी प्रॉपरली प्रोफेशनल हूँ। और पहला मेरा जो कह लें कि जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ वो सिविल सर्विस से था। और देन उसके बाद मैं फिर वहाँ से छोड़ के तो मैं अपना वो शौक पूरा करने के लिए जो था वो कंज्यूमर मार्केट में आ गया और हमने वो सीएनजी एंड उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि मैं बीई इलेक्ट्रॉनिक्स हूँ, और वहाँ से फिर मैंने वो कुछ अर्सा हमने किया। जब वो एक बूम आया सीएनजी गाड़ियों का साथ, जैसे वो आपके इमुलेटर्स और जो गाड़ियों के एडवांसेस होते थे वो हमने बनाए। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब हमारा एक नाम था, एलेग्रो का हमारा ब्रांड था। देन उसके बाद जो था मेरे साथ एक साहब मिले और हमने एक कंपनी फॉर्म की, इट वाज अ स्टार्टअप। अभी भी वो काम कर रही है लेकिन मैं छोड़ चुका उसको। और वहाँ पे जो हमने यही फेस रिकग्निशन और इस तरह की चीज़ें हमने लोकली डेवलप की हैं लाइक 2007 से ऑनवर्ड। और फिर मैं चाइना में जो हमारा ऑफिस था मैं वहाँ पे रहा लाइक 6-7 ईयर्स। और फिर जो हमारी कंपनी थी उसका ऑफिस जो था वो शिकागो में है, सो हेड ऑफिस। मैंने 2016 में हमने अपने रास्ते अलग कर लिए। उसके बाद फिर मैंने फिर अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। और मैं ऑब्वियसली जब चाइना में था तो मैंने वहाँ पे मतलब इंस्पायरेशन ली काफ़ी चीज़ों से। वहाँ पे जैसे ये वल्नरेबिलिटीज की बात हो रही है या साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक चीज़ है, शायद आप लोग जानते होंगे, उसको कहते हैं द ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना। उन लोगों ने नेशनल लेवल पे वो बनाई, यानी इवन आपको चाइना की ट्रैफिक आम वेब पे नजर नहीं आती। आप वैसे एक्सेस करते हैं जैसे वीचैट वगैरह हम लोग यूज करते हैं या बाकी चीजें यूज करते हैं, लेकिन वो बाहर की दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है, हम उनके साथ कनेक्ट होना हमारे लिए थोड़ा सा मसला होता है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने वीबो बनाया या उन्होंने जैसे अपना अली एक्सप्रेस बनाया या बाकी, तो
किसका मकसद ये कि उन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ताकि वो अपनी कौम को जो है वो बाहर से, स्पेशली वेस्टर्न, उससे अपने आप को सेपरेट कर सकें और वो अपने वाला, क्योंकि अगर जब चाइनीज अगर आपके इधर आ गए, और ऑब्वियसली चाइनीज एंड रशियंस वो बहुत मशहूर हैं ये हैकिंग वैकिंग के सिलसिले में, तो और उनके पास जो टेक्नोलॉजीज हैं ऑब्वियसली वो इन्हीं को रिवर्स इंजीनियर करके और आगे। तो अब जब मैं पाकिस्तान में मैंने स्टार्टअप अपना शुरू किया अपनी यूटी के साथ, जो लाहौर के मेरे साथी थे, दोस्त थे, उनके साथ, अ, ये मेरा तकरीबन को 30 साल कहने के स्टार्टअप है जो मैं अपना पर्सनली मैंने शुरू किया है। तो मैं अब आईओटी के ऊपर, चूंकि मेरा पीछे भी एक्सपीरियंस था और एआई के साथ और बाकी मामला के साथ, तो इस वक्त मैंने इस चीज़ पे पहुंचा, जैसे अभी डॉक्टर शहीद साहब फरमा रहे थे कि प्राइवेट एंड पब्लिक वाला जो सीन है। तो मैंने ये देखा जी, अब होम ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू लोग जो हैं वो ज़्यादा आईओटी डिवाइसेस के साथ हैं। जैसे मतलब अब हर चीज़ को अब आईओटी नहीं कह सकते, और कह भी सकते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट में किस जगह पे आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग कौन सी चीज़ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये मोबाइल फोन है जिसमें आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग भी सुन रहे हैं, तो ये जो आपका डिवाइस है ये आईओटी का एक, उसके जो इकोसिस्टम है उसका एक हिस्सा जरूर है, और सम टाइम एज अ रिमोट कंट्रोल जरूर है, लेकिन वो जो छोटी सी एक डिवाइस है जो कि आपका एसी ऑन या ऑफ कर रही है, या वो जो छोटा सा जो लाइट का बल्ब है, या जैसे आजकल अलेक्सा और बाकी जो मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपकी वॉइस रिकग्नाइज करते हैं, और मतलब देयर आर बहुत सारी ऐसी डोरबेल्स हैं जो आपका फेस रिकग्नाइज करती हैं, और इन सब के साथ इशू है वो ये है कि दे कॉल बैक होम। इवन जैसे मैंने अर्ज की कि चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऐसे मतलब ऊज आउट हुई हैं कि वो दुनिया के कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे वो मौजूद नहीं है। और उसकी बड़ी मिसाल ये है, जैसे आपका वेब कैम्स हैं, आपके ये सिक्योरिटी कैमराज हैं, और उनके पीछे जो डीवीआर लगे हुए हैं, वहां से डाटा डायरेक्ट स्ट्रीम होता है उनके सर्वर्स पे, और वो मतलब वो आपका जो है वो बिग डाटा कर रहे हैं वहाँ पे, और वो मे बी कुछ मामला वहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, और इसी वजह से जैसे आपको पता होगा कि यूएस में उन लोगों ने जैसे हवावे को बैन किया, और भी उनके फटे चलते रहते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी कंसर्न और बाकी मामला। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जब आया और मैंने ये देखा कि यार यहाँ बहुत सारा मसला ये है कि यहाँ पे अगर हम आईओटी करना चाहें तो हमें उसको ऑफलाइन मोड में चलाने की जरूरत है, या दूसरे मानों में प्राइवेट क्लाउड में। मिसाल के तौर पे एक घर है, उसके अंदर 10 डिवाइसेस लगी हैं, तो आपको क्या जरूरत है कि वो आप वो बैक, मतलब वो अगर ओरिजिन उसका जो अगर चाइना है या फॉर एग्जांपल यूएस है, मतलब ये गूगल के जाके वहां से वो कर रहा है, तो मतलब ये सारा इतना लंबा वाया काट के आता है डाटा, तो क्यों नहीं उसको घर के अंदर ही चलना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ जो डेवलपर है या जो वेंडर है उसकी ये एथिकली मैं समझता हूँ कि उसका है, लेकिन चूंकि इनके साथ पैसे कमाए जाते हैं, वो डाटा इकट्ठा किया जाता है। मिसाल के तौर पे अभी मैं अच्छा तो नहीं समझता कि मैं बताऊं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली बस बहुत से दोस्तों की नजर में वो बहुत हम्बल सी चीज होगी, लेकिन बट आई एम ट्राइंग कि मैं पाकिस्तान के 3 मसले हैं जिनको मैं एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ये है कि अब जो दोस्त बाहर बैठे हैं वो शायद उतना वो कर्व महसूस ना कर सकें जो कि एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान उसको उसमें से गुजरता है। वो है आपकी 3 जरूरियात जिंदगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी, आपका गैस, और आपकी पावर, जिसमें आपकी तनख्वाह का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो खर्च होता है। आपके बड़े बिल जो इसी में आते हैं, जैसे पिछले दिनों में बड़े शदीद किस्म के क्राइसिस आए, लोग बेचारे बिलबिला उठे, और स्टिल वो सिलसिला जारी और सारी जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती और वो बाकी मसाइल हल नहीं होते आपकी इकोनॉमी के। सो हमारे जैसे मैं लाहौर में स्टेशन हूँ, घर मेरा यहीं पे है। IPIP, Irish Pakistani ICT Professionals. An open access platform for present and future Irish Pakistani ICT professionals. Professional and social networking. Information and training seminars. Career guidance events. Upskilling sessions. Community get-togethers.
Irish Pakistani ICT professionals. Join us, guide us, contribute and play your role in this community building project. IPIP, Irish Pakistani ICT professionals.